Hello student, let us start the chapter how, when and where. The first chapter of history. Before starting the chapter, what is history? I'll clear here what is history. Before that, what the word history is saying. Simple, we can divide it into two parts. The first one is his and the second one is story. A story of that particular person is history, means the past. What we learn about past is that the story of that past is the history. Importance of history, as I had given this definition of history. In history we found that how they were in the past, how the peoples were in the past and how they changed themselves, what were the main turning points, that we all learn from history. There is a lot of history, like whatever was the past, what was the past or whatever is the today is just because of the past, and the tomorrow is depend on us, our present, and we decide our future whatever we learn from our past. I'll give an example of myself, like it is my grandfather. Because of my grandfather, my father is there, and because of my father I am here. Today I am here just because of my past, that is my grandfather, and tomorrow my son is just because of me. So whatever we today is just because of our past. We learn a lot from our past, and this is how we decide our future. So history is important and its dates is also important. Which date? Related when any incident or any event is happened, that on which date that particular incident was happened or any particular event was happened. The turning point of the history were taken on which dates. As an example, like there were many governor generals who rules the India. In the year 1878, the Vernacular Press Act, Arms Act, one of the major decisions taken, it was in the year 1878, Ilbert Bill, etc. The decisions taken by Lord Macaulay related to education in India, etc. They all are just because of these dates. Now that is why the dates are important. Now फटाफट in हिंदी रिवाइज इट. हाउ, व्हेन एंड वेयर. कब, कहाँ और कैसे कोई चीज़ हुई है, ये सब हम हिस्ट्री में ही तो पढ़ते हैं. अब देखिए ना, यहाँ हिस्ट्री का जो वर्ड है हिज स्टोरी, उसकी कहानी, उसकी किसकी, बीरबल की कहानी, अकबर की कहानी, गांधी की कहानी. पर आखिर ज़रूरत क्या है हमें उनकी कहानी जानने की? जो गए सो गए. आज उनकी कब्र को दोबारा खोदने से फ़ायदा क्या? इम्पोर्टेंस इसकी बहुत है हिस्ट्री की. जो भी आज है वो कल के कारण ही है. वी फाउंड हाउ दे वर इन द पास्ट. लोग पहले कैसे रहते थे, उसी का नतीजा तो हम लोग आज जिस तरीके से रह रहे हैं वैसा है. और कल हम जो डिसाइड करेंगे वो पीछे हमने जो रहना सीखा है उससे जो हमने सबक सीखे हैं उस पर डिपेंड करता है. एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने मेरा खुद का एग्जाम्पल दिया है कि मैं आज अगर हूँ तो मेरे फादर के कारण हूँ, और मेरे फादर हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर थे. मतलब कि अगर मेरे ग्रैंडफादर नहीं होते तो आज मैं नहीं होता, अगर पास्ट नहीं होता तो आज प्रेजेंट नहीं होता. अगर मैं आज हूँ तो मेरे ग्रैंडफादर के कारण हूँ, और मुझे मेरे ग्रैंडफादर को इम्पोर्टेंस इस लिहाज से देनी ही है. ऑब्वियसली जो मेरा फ्यूचर होगा, मेरा सन, वो मेरे आज के पे डिपेंड करता है कि आज मैं अपने आप को किस तरह से बनाता हूँ,
उस परिवेश में ही रह के मेरा सन जो होगा वो संस्कार पाएगा और आगे बढ़ेगा, उसको उस तरह से मैं एजुकेशन दिलाऊंगा, वैसा वो बनेगा। नाउ द नेक्स्ट इज विच डेट्स। तो डेट्स की क्या इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड, ये डेट्स जो होती हैं वो रिलेट करती हैं किसी भी तरह कोई इंसिडेंट, कोई घटना घटी है, कोई इवेंट हुआ है जो उस पर डिपेंड करती है। ये सब घटनाएँ इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने कब आज़ादी पाई, 15 अगस्त 1947 को। 1857 में जो है वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो हुआ था। यहाँ पे एग्जांपल गवर्नर जनरल के दिए गए हैं कि इस गवर्नर जनरल ने ये अलग अलग एक्ट्स और बिल्स थे वो लेके आए थे, तो वो पर्टिकुलर इन डेट्स में लाए थे, जिसके कारण कई सारे चेंजेस जो है वो हमारी हिस्ट्री में आए थे, और इनमें से कई एक्ट्स तो अभी भी हमारे कंट्री में चल रहे हैं। हाउ डू वी पीरियडाइज, आखिर हम लोग किस तरह से अपने आप को अलग अलग पीरियड्स में बांटते हैं। वी periodize the history of India is first periodized by James Mill, a Scottish economist and a political philosopher who published a history of India book. So this is how first time we get a history book of India. But here this person divided Indian history into first period by calling it Hindu period, the second period by calling that period Muslim period, and third period by calling that period as a British period. Means he divided Indian history on the basis of religion. Somewhere this is how they showed that during this period this particular religion was superior, and then next superior religion was Muslim, and then come the Christian religion, and this Christian religion is the best and the most superior religion, and this religion civilized us, the Indians. The ancient societies were at a lower level of civilization. What they think, according to them, they are most civilized persons, they are most educated persons. As what Macaulay said, that only one rack of European library takes much more knowledge than the whole literature of Arab and Indian literature. So this is how what they think, but they forget they were showing their superiority of British. You can see in the books and the pictures of that period, they all stands like a king or a god, and the Indians are just behind of them, means they are inferior. So they always show that they are superior and realize the Indians that they are inferior. When they came India, the Indians, they show the Indians like the Naga sadhus and the ladies without blouse. They thought that they are a jungly type of people, but they forget that just 2000 years back, if we go, the area which is today France, Britain, Spain, that whole area was just a forest, and the people of that areas were living like a early animals like, while we the Indians were civilized just 7000 years back. So how much civilized we are more civilized than these Britishers, but no one at that time realized this thing to Indians, and that is why the British realized that the British came here to civilize the Indian. Not only this, James Mill also said that he also suggested that
that the British should conquer all the territories in India. Means it has become the main administrative head of India, and this is how they civilized us. Let us revise it in Hindi. How do we periodize? हम लोग किस तरह से अलग अलग पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं हिस्ट्री को? इंडियन हिस्ट्री पहली बार जो लिखी थी वो जेम्स मिल ने 1817 में लिखी थी। जेम्स मिल जो ब्रिटिश आइलैंड है उसी में एक कंट्री है स्कॉटलैंड, तो वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट वो पॉलिटिकल फिलोसफर था जिसने अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से पब्लिश की थी बुक। इस बुक में इंडियन हिस्ट्री को उसने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पीरियड को उसने हिंदू पीरियड कहा एक रिलीजन के नाम पे, सेकंड को मुस्लिम पीरियड और थर्ड को उसने क्रिश्चियन पीरियड। तो अपने आप में नज़र आ रहा है कि किस तरह से वो रिलीजन के नाम पे जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहे हैं। उन्होंने एशियन सोसाइटीज़ को काफ़ी लोअर मानते थे, ये लोग की लोअर लेवल की है, इनकी सिविलाइजेशन बहुत लोअर लेवल की है। अब ये बात अलग है कि दुनिया की सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन एशियन ही है, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या चाइना सिविलाइजेशन हो। वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। ये बात अलग है कि आज से सिर्फ 2000 साल पहले वो लोग अर्ली मैन की तरह रहते थे। ब्रिटिश केम टू सिविलाइज इंडिया, मीन्स वो लोग जो है इंडिया में आए थे ताकि वो इंडिया को सिविलाइज कर सकें। इनफैक्ट यहाँ तक कि जेम्स मिल ने तो ये तक सजेस्ट कर डाला कि इंडिया को सिविलाइज करने के लिए हमें उस पर राज करना चाहिए, उसको अपने अंडर में ले लेना चाहिए और फिर उसको सही तरीके से एक कंट्री की तरह रूल करना चाहिए। ब्रिटिश एंड द सेकेंड वन इज द historians. The British divided Indian history into 3 parts, that is the Hindu, Muslim and the Christian, or we can say the British period. On the other hand, the historians, the scholars, they divided Indian history as whatever is famous in the world, that is the ancient, medieval and the modern history. Now both these divisions creates problems. The British division is they divide the Indian history on the basis of religion. A variety of faith exists simultaneously. The lives and the practices of the others do not really matters, according to the James Mill. Even rulers in ancient India did not share the same faith, if we see. So the main problem comes here is that if we see the Hindu period, during that period there is a very big role of Buddhism and Jainism also. Then how could we say that particular period a Hindu period? Similarly, if we come to Muslim period, there is a very big role of Hinduism in South India, and the Hindus of Rajputanas plus Sikhism is also there during this period. So we cannot say this period a Muslim period. Similarly, the British period is a Christian period. We cannot divide this period on the basis of religion. All the religions and their presence is important at that time also. So that is the main problem. On the other hand, Asian period, medieval period and modern period is famous in the world, but the European Asian period is totally different from our period. The British divided the history according to the modern world. If we see the ancient history, then our ancient history is 6 to 7,000 years old, while the ancient history of Europe is just 2 to 3,000 years old. On the other hand, medieval history, that is also not same. If we see the modern history, then the modernization comes too early in Europe. It came in Europe in between the 14th and 15th century, while in India after 300 and 350 years after the modern period comes in Europe, the industrialization period coming in India. So the time of the periods of Asian, medieval and modern is not same of the Europe and the Indian history. So this is what the problems came by dividing history according to this. फटाफट in Hindi
जेम्स मिल ने डिवाइड किया था या ब्रिटिश ने डिवाइड किया था हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश यानी कि क्रिश्चियंस के बेस पे। तो दूसरी तरफ जो हिस्टोरियंस रहे हैं, कई हिस्टोरिकल स्कॉलर्स रहे थे, उन्होंने वर्ल्ड में जो फेमस है उस बेस पर एशियंट, मिडेवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बेस पर डिवाइड किया था। पर ये दोनों चीज़ें में जो प्रॉब्लम आ रही थी, अगर हम लोग प्रॉब्लम देखें तो ऑब्वियसली इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि कैसे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पीरियड को रिलीजन के नाम पे कह सकते हैं। हिंदू पीरियड ठीक है, उन्होंने हिंदू पीरियड कह दिया, पर इस पीरियड में इस उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस बुद्धिज़्म की रही थी। अशोका ने तो पूरे कंट्री को ही हिंदू बना दिया था, प्लस ना सिर्फ कंट्री, पूरे एशिया में जो है जो बुद्धिज़्म स्प्रेड किया था वो अशोका ने तो स्प्रेड किया था। तो बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा रोल रहा है इस टाइम पीरियड में। जैनिज़्म का भी बहुत बड़ा रोल रहा। अगर हम लोग मुस्लिम पीरियड की बात करें तो मुस्लिम पीरियड में ऑब्वियसली हिंदूज जो साउथ के थे या फिर राजपुतानास के थे उनका तो रोल रहा ही रहा है। साथ में जो सिख थे, इस कम्युनिटी का ना सिर्फ इस टाइम पीरियड में बर्थ हुआ बल्कि इनका बहुत बड़ा रोल भी रहा। और ब्रिटिश पीरियड में भी सब रिलीजन का बहुत बड़ा रोल रहा, सब रिलीजन्स के लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा। तो कैसे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पीरियड को किसी पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पे जोड़ के उस रिलीजन का पीरियड कह सकते हैं। दूसरी तरफ हिस्टोरियंस ने ठीक है, एक अच्छा तरीका है हिस्ट्री को एशियन, मिडेवल एंड मॉडर्न बेस पे डिवाइड करना, पर यहाँ पर समस्या जो आ रही है या प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि हमारा पीरियड और ब्रिटिश पीरियड यानी कि यूरोपियन पीरियड सेम नहीं है। हमारे यहाँ का एशियंट हिस्ट्री देखें तो वो बहुत पुरानी है, लगभग 7000 साल पुरानी। दूसरी तरफ देखा जाए ब्रिटिशर्स की या यूरोपियंस की तो उनकी तो सिर्फ 2000 या 3000 साल पुरानी हिस्ट्री है। मिडेवल हिस्ट्री सेम नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो कहीं पहले जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में आ गया था, हमारे यहाँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन उसके भी 300 साढ़े 300 साल के बाद आया। तो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड और उनकी मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड भी सेम नहीं मिलता है। तो इस तरह से जो टाइम पीरियड जो है वो सेम नहीं मिलना, यहाँ पर हमको प्रॉब्लम दिखती है। What is a colonial? When the industrializations came in Europe, the land of Europe is, this is the land of Europe. Industrializations came in Europe, so the maximum land area of Europe, we see a lot of industries were settled there. Obviously, when industries settled there, then competition is also there. So because of this competition, the number of industries increased. Now these industries or population also increased, which help these industries for the workers they need. But because the land is limited, they need, first of all, they need what? Raw material. For this raw material, which the Europe is not provided them, they start moving to the new world, the American continents, African continent and the Asian continent and Australia. But when they produced product, like the total population of Europe is 100, but they produce 1000 products, means 900 extra. For selling these products they need what? The second thing is market. So for market also they start searching the new world, and when they go to the new world for trade and establish, or we can say the control over that particular area, that particular area is known as the colony of that country. Especially at that time, the main imperial nations of the powerful countries were Dutch, means Holland, Netherlands, or we can say, and the second country Britain, third country France, fourth country Spain, and the fifth country is Portugal. The territory which they control known as colony, the colony of that particular country. Like we were, means the India was a colony of Britain. That particular period, this particular period is known as a colonial period. I hope this is clear. They came from raw and market. They also brought changes, the economic, social, cultural, etc. changes. यहाँ पर बात उठ रही है कि व्हाट इज़ कॉलोनी। जब यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में, और इस पॉपुलेशन की डिमांड के लिए और इंडस्ट्रीज़ लगी, जब इंडस्ट्रीज़ लग रही थी तो कंपटीशन था, तो इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। इन इंडस्ट्रीज़ को छोटा सा कॉन्टिनेंट यूरोप पूरा रॉ मटेरियल नहीं दे रहा था। इस रॉ मटेरियल की डिमांड को पूरा करने के लिए
और दूसरा जब मटेरियल बन जाए तो उसको बेचने के लिए मार्केट, इसके लिए जो है ये लोग जो है इन्होंने एस्टेब्लिश करना शुरू किया अपनी कॉलोनीज, अपनी इकोनॉमिक एंड सोसाइटी पर्पस पर, और इसके कारण हमने बहुत बड़ा इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस जो है वो भी यहाँ पर देखा। दैट्स ऑल फॉर दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, हाउ, व्हेन एंड वेयर। Any kind of problems or doubts, whatever, you can consult me by sending me comment. I will definitely reply you. Thank you.